Right, so we start with heights and distances today. New chapter, very easy, very easy. The two abilities are required here: ability to understand the language English and the ability to remember some trigonometric formulas. 60, 30, 45, this should be known at your fingertips. अगर चाहिए तो ऐसे लिख के दे देता हूँ, ये थोड़ा याद रखिएगा. Tan 30 will be 1 upon root 3. Tan 60 will be root 3. Tan 45 degree will be equal to 1. बस इतना जानना चाहिए. And if you want to know, sin 30 will be equal to half. Cos 30 will be equal to root 3 by 2. So if you know these two, you know the whatever is cos 30 will be what? Sin 60. And whatever is this will be cos 60. बस इतना जानना चाहिए. Life is beautiful. Okay, so we start. चलो आ जाओ, इसको समझना जरूरी है. Let's have our concept first and then we will do. ठीक है, चलिए थोड़ा ड्राइंग बनाना सीखिए. Take. So we're doing problems on heights and distances. Okay. चलिए ऐसा एक डॉटेड लाइन बना लीजिए. इफ यू वांट scales, scales are there, some 2-3 scales, right, and make one observer, beautiful observer. ठीक है, right, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ एक बना लीजिए. हाँ, यहाँ पे बनाइए आउट हियर, ऐसा कुछ बना लीजिए, है ना. ठीक है, and this is your ground level. ठीक है, इतना बना लिया. ओके, नाउ इफ योर विजन, ऐसा अगर हमारा विजन है, विजन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. हम तो बहुत तरीके से देख सकते हैं, बट आई एम टेकिंग द विजन विच इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल. इसको हम कहते हैं, ये हमारा है line of sight. You know, it's a army term also, line of sight. Understood? जो आप सीधा देखते हो. Very good. और मान लो right now on the sky there are some clouds out here. यहाँ पे cloud है. ठीक है, लाइन ऑफ साइट, द लाइन विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल. ये कैसा है? ये दिस लाइन इज टिपिकली पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल. अंडरस्टूड? इफ दिस लाइन ऑफ साइट, नाउ व्हेन यू ट्राई टू सी द क्लाउड्स, आपका लाइन ऑफ साइट ऊपर उठ जाता है. यहां देखो, देखने से समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा. व्हेन यू ट्राई टू सी द क्लाउड्स, आपका लाइन ऑफ साइट, आपका सर ऊपर उठ जाता है. यू ट्राई टू लुक अबव. ठीक है ना? व्हेन यू ट्राई टू लुक अबव और आपका आंख ऊपर उठ जाता है, इसको देन यू आर मेकिंग एन एंगल आउट हियर. यू आर मेकिंग एन एंगल थीटा आउट हियर. ओके, एट दैट टाइम थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. Elevation means, suppose you are standing in front of your building. Let's say we are standing in front of titanium. How do we look at titanium? We will be looking at titanium like this, a big building. And that face of the building is known as in civil engineering, we call it as the front elevation. A building will usually be sold to you with drawings, like they'll give you the plan. Plan is the top view, how a crow looks on the building. So they'll show you what is
bathroom, living room, drawing room. Have you seen architects those? That is called plan. That is top view. Imagine yourself on top of the building and looking at this building. That's called plan. And apart from plan, you have another one which is known as the front elevation. Front elevation मतलब सामने को देखना. That's called, in mechanical engineering we call it front view. Civil guys will call it front elevation. So front elevation को देखने के लिए आपकी आंखें ऊपर उठ जाती है. That's called angle of elevation. Have you understood? So theta is my angle of elevation. These two things you should understand in this chapter. और मान लो this ground level is a lovely little water and we have प्यारा सा मुन्ना सा मछली यहाँ पे तैर रही है. ट्रिक 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 ट्रिक. ओके. अब इस मछली को देखने के लिए आपको कैसा होगा? आपको नीचे देखना होगा. Anything that makes you feel low or look low, then we would say, अरे this fellow is suffering from depression in his life. जिंदगी में सब कुछ लो है उसका. So you are again making an angle with the horizontal. Say if I call this as theta E, I call this as theta D. इसको हम बोलेंगे angle of depression. Depression. Angle of elevation, angle of depression. So look at me, it's like this. My line of sight is like this. Anything that I see above the line of sight, this becomes angle of elevation. Anything that I see below, it is angle of depression. डिप्रेशन मतलब नीचे जाना, डिप्रेशन मतलब दुखी रहना, लो फील करना, लो, बस वैसे याद रखो. समझ में आया? तो इसका मजेदार चीज कोई कोई बोलता है दैट यू शुड ऑलवेज, इफ यू आर अ चॉविनिस्ट मेल, यू ऑलवेज मैरी अ लेडी हु इज टॉलर टू यू इन हाइट. व्हाई? इन दैट केस व्हेनेवर आई लुक एट हर, आई लुक विद एंगल ऑफ एलिवेशन. सर उठा के देखूंगा एंड शी विल लुक एट मी, सर झुका के, विद एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये याद रखोगे तो भी समझ में आ जाता है. समझ में आया ना? इफ माई वाइफ इज टॉलर देन मी, मैं उसे कैसे देखूंगा? ऐसे सर उठा के बात करूंगा. और वो कैसे बात करेगी? सर झुका के बात करेगी. सो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. समझ में आया? अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में अंदर ही अंदर कुछ और हो रहा है जो आपको, पेंसिल बेटा सामने पकड़ के लाइन खींचते हैं, उतना दूर में पकड़ के लाइन कारपेंटर खींचता है. यू आर अ स्टूडेंट, यू शुड होल्ड द पेंसिल इन सच अ मैनर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग आउट हियर? इफ यू सी, let's take only the line of sight, right? Line of sight को ऐसे लिया. These are also line of sight. This is when the line of sight is elevated from the horizontal. Sir, is this not line of sight? This is line of sight. The line of sight is elevated from the horizontal. The line of sight is at a depression from the horizontal. Did you understand? अगर इसको अच्छा से देखा जाए, then what we are making is a right angle triangle. End of the day, this is a right angle triangle. Do you understand? And so our trigonometry comes into play. A, this is B, and this is C. Did you understand? So trigonometry can come into play. Once you know theta, you can play between all these things with the ratio. समझ में आया? एंगल ऑफ डिप्रेशन का कहानी थोड़ा सा मजेदार रहता है. एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? वी डोंट टेक दिस ट्राइंगल डायरेक्टली, हम ऐसा एक ट्राइंगल बना लेते हैं. जरा देखो तो. If I make a triangle like this, ऐसे अगर एक ट्राइंगल बना ले, then these are alternate interior angles. So don't you think this should also be my theta d? अगर ये theta d है तो ये भी theta d है ना, right? तो यहां भी बन गया AEF, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. बस that is the story. अच्छा, अब ये स्टोरी को सर आप अप्लाई कैसे करते हो? उसको अप्लाई हम ऐसे करते हैं. देखो how you apply this story. The story is applied like this. Real life story. Now we'll say real life. We are going to measure the height of titanium tower now. हम टाइटेनियम के हाइट को मेजर करेंगे. समझ में आया? Look how we will do. देखो टाइटेनियम के हाइट को मेजर करेंगे. Now this is titanium building that is standing right in front of me. ये टाइटेनियम है. समझ में आया? And you take Vivan and you ask Vivan to stand here and clamp one small, what you call, rope. Ask Vivan to clamp one rope out here, rope, and we will be 2-3 more fellows out here. We are standing with some big protector. We take that rope and say we nail that rope on the ground. ऐसे करके कहीं ना ऐसा nail करते हैं, इस तरह से nail करते हैं, because since you all know these figures, see, you are understanding? As kids we can nail it here. Try and understand this, then you will get the beauty. This is titanium tower.
Vivan has nailed one rope here and he has let the rope fall on the ground. Now we are taking the rope, we can nail it here, peg it here, peg it here, peg it here. So हमने एक बड़ा प्रोटेक्टर भी ले लिया है ग्राउंड में. There's a big protector we have taken. Okay, we have taken a big protector and we have pegged it at such a portion that it is making say 30 degree. हमने यहाँ पे peg कर दिया इसे A B C, right? And then we tell our friend, you go here. And we measure this part. This part is say D. We have measured D. How much is D? D measure कर सकते हैं ना? Ground of titanium to ground of peg point. All we are interested is to find what is the height of titanium. This is titanium's height H. बस अब लाइव लगाने का. So the ratio we'll put the ratio of tan 30. If you put tan 30 opposite side, that is height of titanium divided by adjacent side, that is D. So the height of titanium is given by D tan 30. Do I know the value of D? Yes, sir. Sorry, tan 30 1 by root 3. बस हो गया. Titanium के height आ गया. This technique was used by actually Greeks when they used to have war and the enemy used to advance. These angles could be calculated. They could actually find out in how much time the enemy will approach the seashore or how far the enemy is, and very very accurate. ठीक है? इसके ऊपर problems होते हैं. तो पहले कुछ प्रॉब्लम के टाइप्स देखते हैं. व्हाट ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू गेट. हैव यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? दिस इज टिपिकली फाइंडिंग द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग. लेट्स सी वन मोर क्राइटेरिया और फिर प्रॉब्लम्स करेंगे. एनीवन हैज एनी क्वेश्चन टू बी आस्क्ड हियर? सो व्हेन यू ट्राई टू फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग वी आर डीलिंग विद एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं. इसको मिटाऊं बच्चा? इफ यू आर डन कैन आई रब दिस? ओके, सो आई एम रबिंग दिस. लेट्स सी वन मोर interesting observation. Let's see one more interesting observation, and this observation is something like this. Say we have a ground level. ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, and we have a skyscraper, right? This is a skyscraper, और skyscraper के ऊपर में एक फ्लैग मास्ट लगा हुआ है. So there is a flag mast. Okay, understood. So we have a point A, we have a point B, we have a point C. So we might be interested to find the height of the skyscraper. We might be interested to find the height of the flag mast, or all together. But what interesting also happens is, say sometimes they might also give you that, let's say there is a cliff out here. ऐसा कोई cliff है, right? And the observer is somehow the observer is sitting out here. ये cliff में इधर बैठा हुआ है. And when they say the observer makes an angle of blah blah, you don't make the angle from here because these observers are taken as point object. We take them as point object. So the observer makes an angle of elevation to the mast as so much, and at the same time the observer also makes an angle of depression. This is the angle of depression, theta d and theta e. Those two values will be given, and the observer is seated at a distance d from the foot of this particular building. They may ask you calculate the value of the height of the building and this. So जब आपको theta d दे रहा है तो this is also theta d. Remember, ऐसा type problem हो सकता है. We'll do all these problems. Did you understand the scenario here? Observer is sitting somewhere here. एक ये हो सकता है. अच्छा, एक और सिनारियो देखते हैं, एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं, कैसा टाइप प्रॉब्लम होता है, तब आपको सब समझ में आ जाएगा. And I'm waiting for that day desperately now. Not only me, we all are waiting, but obviously not with this result. देखते हैं वो result क्या है. So they will tell you that there is a beautiful tree. ऐसा एक ट्री है, ठीक है, और रात को बारिश हुआ, बहुत बारिश हुआ, और ये ट्री टूट के गिर गया. हाफ पे टूट के कैसे गिरा? द ट्री ब्रोक समवेयर फ्रॉम हियर. ऐसे यहां से ब्रेक करके रोड में गिर गया. ड्राइंग शुड बी गुड, देन यू विल अंडरस्टैंड. ट्री टूट के गिर गया. आपको बोलेगा दैट आफ्टर फॉलिंग द ट्री इज मेकिंग सम एंगल. So see what all things are happening out here. Some angle will be formed. So you know broken portion. Find the height of the tree. So the height of the tree will be इस triangle का perpendicular plus the hypotenuse.
Because the tree is like this, na? Height of the tree निकालने देगा. Are you understanding? The tree's height will be what? My drawing is not exactly correct. Let's make the tree little bit more. Let us make it like Vivan's hairs, so they'll be more beautiful. This is the tree. The tree has fallen. अब ट्री का हाइट क्या है? ट्री तो यहां से टूट के गिरा ना. ट्री तो इतना लंबा था बेटा. दिस हाइपोटेन्यूज प्लस दिस बेस. हैव यू अंडरस्टूड? ये एक टाइप का प्रॉब्लम हमें आ सकता है. अच्छा, और एक टाइप का प्रॉब्लम कैसा आ सकता है जरा देखो. इंटरेस्टिंग. Only thing is you should apply your common sense. Now another common sense, okay? Let's say this is titanium tower. This is titanium tower. A person right now is at a distance, say d meters from titanium tower. The person will have an angle of elevation to titanium. Okay, elevation is always shown from here because the person is negligible as compared. So we say that the person is here and the angle of elevation right now the person is making is say 30 degree, right? The person walks another say b meters towards the tower. मतलब आदमी कहाँ आ गया? अभी इधर आ गया. You tell me the angle of elevation should increase or decrease? Increase. The more you come near a tower, you will go like this. Why do you not buy the tickets of cinema hall right in front? अगर सलमान खान को ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे डांस कर, और रात को आयोडेक्स लगा के सो जाओ, and then you'll understand what is angle of elevation. Did you understand? If the person walks more towards this side, this angle will go up to something like 60 degree or something. घटेगा तो नहीं. And if he walks away, how much will it be? It will reduce. So they will sometimes give you the two angles, not specify which is what. Like an idiot, don't put 60 here and 30 here. That's common sense. जितना पास किसी चीज के जाऊंगा तो ऐसे देखूंगा, है ना? समझ में आया? और एक टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, वो भी देख लेते हैं. समझ में आया? चलो एक और टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं. नाउ दिस विल यूज योर ऑप्टिक्स. कैसा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज द लेवल ऑफ अ लेक. लेक है ये, ठीक है? ऑन दिस लेक देयर विल बी अ क्लिफ. वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. ऑन द क्लिफ देयर विल बी अ पर्सन हु इज सिटिंग आउट हियर. समझ में आया? एंड देयर विल बी अ क्लाउड. अगर क्लाउड आएगा, मेघ बरसे, मेघा बरसे, जो भी है. And they'll say the angle of elevation for a cloud will be given to you. So basically they are giving you this angle. So whenever angle of elevation you have to draw a horizontal. यहाँ पे horizontal draw हो गया. Right? Oh, did you understand? And this angle will be given to you as theta. And then they will say that the angle of depression on the image of the cloud. ये cloud का एक image form होगा पानी के नीचे. What is the funda? Plane mirror image formation. Object distance is equal to image distance. Image will not be formed on the surface. There is where you will go wrong if you don't apply your knowledge. The river surface or the lake surface behaves as a plane mirror. So for a plane mirror, what is the object distance and image distance? They are exactly equal. Image कहाँ पे बनेगा? Image कुछ यहाँ पे बनेगा. Did you understand? This is the mirror. और ये जो डिस्टेंस है, say this will be the cliff height which is say h, this will be another height which is d, so your this height will be h plus d. ये आपको ख्याल रखना है. ये समझ में आया? Who did not understand this logic? The river surface will act as a plane mirror, so object distance will be equal to image distance. These are the type of problems that we are going to get, right? And one last more problem, I call that problem as Mala auntie problem. So Mala auntie problem कैसा है? देखो, Mala aunties are those ladies to continuously gazing रहते हैं, you know, and then there is a teen girl or a teen boy in the neighborhood, then she has no other job just to keep on watching. Mala auntie वाला problem कैसा है? Mala auntie problem is something like this. Mala auntie stays on some tower top out here, some flat. राइट. एंड देयर इज, जो भी है, खुश सी एक लड़की नीचे है कि कोई उसे मिलने आ रहा है, और उसको मिलने आ रहा है कैसे? गाड़ी लेके मिलने आ रहा है. इसमें थोड़ा सा फिजिक्स भी लगेगा. गाड़ी लेके मिलने आ रहा है. एंड वंस माला आंटी लुक्स एट दिस गाड़ी, हर आइज लिट अप. शी विल लुक इट एट विथ व्हाट? एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है ना? सो शी बेसिकली नोज
What is this angle? They will tell you with what speed this gari is traveling. They'll give you. Okay? So after some time, this gari is going to come here. है ना? This gari is going to come here. और यहाँ पे सुंदर सा शुभमन गिल बैठा हुआ है आने के लिए. ठीक है? बैठा हुआ है. So our friend actually wants to spoil this meeting. So they'll tell that calculate the time now taken. They'll give you another scenario. So they're giving you one more angle. This is 1 theta d1. They'll give you theta d2. Now calculate the time taken by which this car is going to meet this lady. So time means again our same, and in these problems there's no acceleration. So we go by the same formula, distance equal to speed into time. ऐसे problems आएंगे आपको. Simple. So how much more time is required before this car comes? I made it interesting for you. This could have been made as army and watch. I'm making it. By what time should Mala aunty go and rush and inform the parent of this girl? Take your girl away. Somebody is coming to meet her. कबाब में हड्डी बनने की कोशिश करे. तो ऐसे प्रॉब्लम भी बन सकते हैं. आपकी मर्जी, आप इसे किस तरीके से देखो. So there will be some velocity, some time, some angle. So all we will be playing is with tan 30, tan 45, tan 60. इसी में गेम चलते रहता है. ठीक है? Ready for problems now? और कोई ज्ञान? Anyone who has not understood any of the example, feel free to ask me. और फिर हम problems करेंगे. Very very easy. The only thing is you should be able to read the question, understand the question, and then pick up the problem. Clear? Sure. चलो. वो एक क्या है? आर डी शर्मा है ना विवान का. हाँ ये लेते हैं. आर डी शर्मा ही करते हैं. कोई बात नहीं. But I hope we have trigonometry in this book. Wow, the book smells just like the publishers. Use ही नहीं हुआ है. Vivan has not used this. Okay, 1 minute, kiddos. Let me see whether I have trigonometry here or not. 10.1, 11 point. नहीं मैं ये लिया. The book was smelling so publisher. You never used it, ना? हाँ. So 11.1. चलो, let's do some problems, okay? In these questions, your ability will be checked whether you can frame the diagram or not. Diagram गलत बनाया, पूरा question गलत हो जाएगा. चलिए एक question लिखिए पहले. लिखिए. There is a small island. और सब ऐसे स्टोरी जैसा बनेगा ये सब. There is a small island in the middle of a 100-meter wide river. 100 मीटर की चौड़ाई वाली नदी के बीच में एक द्वीप है. There is a small island at the middle of a 100-meter wide river. Got it? And a tall tree stands on the island. और उस island में एक बड़ा सा पेड़ है. And the tall tree stands on the island. Don't make schematic all those picnic spot वाला diagram. All diagrams should end of the day come down to right angle triangles only. ठीक है? Now there is a tall tree that stands. P and Q are points directly opposite. P and Q are points directly opposite to each other. Directly opposite to each other on either side of the bank. On either side. On two banks, not either side of the bank. On two banks. Each other on two banks and in line with the tree. ठीक है? If the angle of elevation of the top of the tree, tree from P and Q, the angle of elevation of the top of the tree. सोच के लिखो ना जो भी लिख रहे हो. From Ravan and Kumbhakaran थोड़ी लिखोगे. From top and bottom. The angle of elevation. If the angle of elevation of the top of the tree from P and Q
from P and Q are respectively 30 and 45 degree. 30 and 45 degree. Find the height of the tree. Find the height of the tree. सार्थक मिश्रा, कैमरा क्यों बंद है? Find the height of the tree. Okay? नहीं, तुमको कैमरा छूने का क्या जरूरत है? You leave the camera ना. Why do you need to touch the camera and then you are changing your icon, logo? वो सब बाद में करो. कैमरा पकड़ने की क्या जरूरत है? अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए. Now you all 30 seconds read the question and try to break it down into your mother tongue or whatever. Have you understood the question? So what are the degrees? 30 and 45. 30 and 45. 30 और 45. तुम स्क्रीन क्या पढ़ रहा है? हेलो सार्थक, स्क्रीन में पढ़ने का क्या है? Unless and until you are on some other screen. What are you reading on screen? I am narrating this problem which should have been written on your textbook. Your head should be down, not looking at the screen. स्क्रीन में क्या पढ़ रहे हो? Unless and until you are watching some other screen. तो कुछ और कर रहा है कंप्यूटर में 100%. बुक में क्वेश्चन दिखाओ, कहां लिखा? तो फिर वो स्क्रीन को क्या देख रहे हो और स्क्रीन को देख के पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? स्क्रीन में तो कुछ भी नहीं है. Try and understand what is the question first. And can anyone explain to me this question? And then I'll draw the diagram as the child tries to explain me. Can you once repeat the question? Repeat the question. So the question is, there is a small tree, there is a small island on the middle of a 100-meter wide river, and a tall tree stands on the island. P and Q are points on the banks, on the two banks, and are in line with the tree, making angle 30-45 degree. Find the height of the tree. हिंदी में बोले तो एक 100 मीटर चौड़ा नदी है, नदी के बीच में एक आइलैंड है, आइलैंड के ऊपर एक ट्री है, ट्री के दोनों साइड यानी कि ऑन आइदर साइड ऑन द बैंक्स क्या है? P and Q पॉइंट है, और P and Q से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है. क्या आप इसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने की सोच सकते हैं? एंड ऑफ द डे सी द डायग्राम हैज टू बी नॉट अ सिनेरिक डायग्राम, इट हैज टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? पहले ये बोलो, क्वेश्चन कोई है जो क्वेश्चन समझा नहीं? हैज एनीवन नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन? क्या है? तेजस एंड ऑल, वो ये सवाल पूछो तो भी हाथ नहीं उठाते हो. Understood, then also no reaction. Did not understand, then also no reaction. See, this question is something like this. There is a river. Let's try to understand it in our common way. Okay. Now, first of all, what mistake you will make? आप ऐसे एक river बना लोगे, right? And you think that the width of the river is how much? 100 meters. और आप यहाँ पे एक बैंक बनाओगे, यहाँ पे एक बैंक. ऐसे डायग्राम बनाओगे तो आपका डायग्राम नहीं बनेगा. देखो, आपका ट्रायंगल्स नहीं बनेगा, इसके डायग्राम ऐसे बनते हैं. देखो, इमेजिन दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर. यस, P is here and Q is here and this is the middle of the island. और यहाँ पे हमारा ट्री ऐसे खड़ा है. P से कितना एंगल बना रहा है बच्चा? 30. P से 30 डिग्री बना रहा है. Q से कितना बना रहा है? 45 डिग्री. हो गया ना हमारा डायग्राम. अभी अगर आपको चाहिए तो आप ये देखो, ये आपका आइलैंड है, ये रिवर ऐसे जा रहा है, ये रिवर ऐसे जा रहा है. P and Q are points. Now how to solve this problem? How will you solve? Solve बताइए. हमें ये हाइट चाहिए. How to solve? Let this distance be A and let this distance be B. We don't know. It's in the middle. Therefore, if this is 100 meter wide. So if this is A, this is how much? 100 minus A. ठीक है ना? आपको मिडिल बोला है क्वेश्चन. There is in the middle of a river. तब तो और भी अच्छा कर दिया है. आपको 50 दे दिया है और ये भी 100 minus 50 which is equal to 50. Job is done. You need to find out the tree.
अगर नहीं देता आप बना सकते थे. If they would have not given, could you calculate? Now take any ratio and tan का ratio ले लो. Tan is this upon this. And suppose they have not given you middle. ठीक है बच्चा, take the question a little bit tougher. They have not given you middle. Let's say this is A, this is 100 minus A. अब कैसे निकालेंगे? Very simple. We will first take tan 30. Tan 30 is H by A. Correct? So H is equal to A tan 30, which is equal to A by root 3. Equation 1. उस साइड से देखें तो क्या हो जाएगा? tan 45 will be equal to H by 100 minus A. और यहां से क्या मिला? H is equal to 100 minus A into tan 45, which is 1, 2. Compare both this equation. LHS, LHS are same. So RHS has to be same. That means A by root 3 should be equal to 100 minus A. Right? Now solve the problem. A is equal to 100 root 3 minus root 3A, or A plus A root 3 is equal to 100 root 3. Now some values for this chapter, keep it in your memory. Root 2 का वैल्यू होता है 1.414 और root 3 का वैल्यू होता है 1.732. बस आपका क्वेश्चन. So what is the value of A? A should be equal to 100 root 3 divided by 1 plus root 3. बस आ गया आपका A का वैल्यू. अगर A का वैल्यू आ गया, then you know the value of H also. Substitute it in any of this. You get the value of H. You can do for 50-50. 50-50 makes it easy. 50-50 में you don't need two equations. With any one equation you can solve. But if you do it with A and A minus A, then you can find out. All the ability is to draw the diagram. If you know how to draw the diagram, then only you will be able to solve the problem. नहीं तो आपका problem रुक जाएगा. See, after explaining so much also, you didn't draw the diagram. And so many diagrams I drew. You did not draw any one of them. If your dad or mom looks at your copy, he or she will think, sir today in 1 hour taught that particular वो फूल वाला जो डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में और उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन कराया है ना. ये कॉपी देखने से look at this copy. If a neutral person sees, let me see what my son goes and learns there. Sir wrote one flower diagram and one question. Heights and distance sir खत्म हो गया. सच्चाई क्या है? सर बीच में कितना डायग्राम बनाया था वो आपने एक भी. I first gave you to how to find out the height of titanium using Vivan as example. After that my next example was if it is a stormy night and a tree falls. Then my example was cloud on the sky and cloud below. Then my example was Mala auntie watching boyfriend coming to meet the girl. Then I went to this problem. लेकिन हमारा बच्चा एक ही डायग्राम बनाया. And one more, cliff and cloud. Then another one I missed, the building and the flag mast. I gave that problem also. वो नहीं लिखने का, टाइम पास मारने का, और फिर मम्मी डैडी देखेगा तो क्या समझेगा, आज क्लास में सिर्फ एक फूल बनाया और फूल के साथ एक प्रॉब्लम कराया. 10:02 तक तो सर मैं क्रिकेट ही खेल रहा था, फिर याद आया मुझे आपका क्लास है, फिर मैं भागा, है ना, फिर मैं आया. See, first of all, our friend Vaishnav, drawing does not come natural to you. So you should place more stress on this. This chapter you cannot solve any question unless and until you know how to draw. जो चीज you put your cricket only ना, अगर आपका बैकलिफ्ट करेक्ट नहीं है तो आप उस पे काम करो ना. आप बार बार क्रीज के सामने जाके स्ट्रोक लेते हो, आप स्टंप आउट ही हो गए, नेक्स्ट मैच में ड्रॉप हो गए. यहाँ ड्रॉप नहीं होता है, यहाँ एक बार और मैच खेलने को मिलता है. मीन्स यू रिपीट 1 year, यू वांट दैट. यहाँ 2 बार मैच मत खेलो इन रियल लाइफ. यू आर नॉट ड्रॉइंग. और ये कॉपी में क्या है?
बस 1 प्लस साइन कॉस, ये ट्रिगोनोमेट्री అయిపోయిందా? वाओ, देखो 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 देखो, हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इतना मैटर। इससे पहले क्या था? दिस वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डन डन, दैट आल्सो डन। So many pages left blank, like Mendeleev's periodic table. These elements will be discovered. ये polynomial, वाह, grade 10, not even one 140 page book over by now. That means that sir is so casual in class. अच्छा चलो, next problem. A man standing on the deck of a ship. Write down. A man standing on the deck of a ship. This is a CBSE problems, huh? Exam problem. A man standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level. The deck of the ship is 10 meter above the water level. Observes the angle of elevation of a hill as 60 degree. So there are three things. There is a water level, there is a deck of a ship which is 10 meter above the water level, and from there he observes the top tip of a hill with 60 degree elevation and the base of the hill with 30 degree elevation. Sorry, 30 degree angle of depression. ये हो क्योंकि आप लोग क्वेश्चन लिखने में चले गए ना, आप मेन पॉइंट्स लिखिए, पूरा स्टोरी में कुछ नहीं रहता है। बेसिकली यू शुड बी इंटरेस्टेड इन द पॉइंट. There is a water level. Again, I am saying, why did I tell the question like that? That will help you to draw the diagram. There is a water level. 10 meters above the water level is the deck of the ship. From the deck of the ship, the angle of elevation of a hill is 60 degree and depression of the foot of the hill is 30 degree. ये points लिख लेने से ही काफी है. Our job is to find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. आओ points लिख लेते हैं क्या क्या है. This question can be brought down like this. We have a water level, then we have a deck 10 meters above water level. Then the third is from deck. From deck, the angle of elevation is how much? 60 degree to a hilltop, and the angle of depression is how much? 30 degree. 30 degree should be this. This is 30 degree to the bottom. यही डिफरेंस है. आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप, and number 2, height of hill. Now question arises, just like you got the problem as dictation, for me also this problem is new. It is open in a book in front of me. Why am I not struggling with the question? Because I tried to pay attention on only something which is required for me. Ultimately ये problem से ship whip सब बेकार की चीजें हैं. The whole problem has to boil down to right angle triangle drawing, है ना? उन चीजों पे ध्यान दो जो आपको हेल्प करेगा. इस पूरे प्रॉब्लम में यही है. आप इसको शिप की जगह में क्लिफ बना दीजिए, माउंटेन बना दीजिए. इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जहां आपको वाटर लेवल जैसा कोई चीज बोलता है ना, पहले उसका लेवल बनाओ. देखो, ट्राई टू मेक द डायग्राम. आपको वाटर लेवल दिया है तो ये वाटर लेवल है हमारा. हैव यू अंडरस्टूड? क्लियर? वाटर लेवल से डेक कितनी ऊंचाई पे है? 10 मीटर्स. तो एक 10 मीटर्स बना लेते हैं कुछ ऐसा, और ये हमारा 10 मीटर्स पे डेक है. ये एक और लेवल हो गया हमारा इस प्रॉब्लम में. एंड टुडे प्रॉब्लम इज बॉइलिंग डाउन लाइक दिस, राइट? सो इसको हमने क्या नाम दिया? ए बी नाम दे दिया. बेसिकली ए बी क्या हो गया? द हाइट ऑफ द डेक. इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 मीटर. यहां से सामने कोई हिल है, हमें नहीं पता वो हिल कहां पे है. बस ये हिल का ऑल्टीट्यूड है, दैट इज द काल्पनिक ऑल्टीट्यूड ऑफ द हिल, है ना? एंड हिल विल बी फ्रॉम वेयर? नॉट फ्रॉम दिस ना. हिल तो जमीन से ऊपर से होगा ना, वाटर लेवल से ऊपर होगा. यहां से ही इज ऑब्जर्विंग, क्या देख रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पे देख रहा है. तो इसको हम कुछ नाम दे दे. P नाम दे देते हैं, Q दे देते हैं, R दे देते हैं. ज्योमेट्रिक ड्राइंग होना है. एंड ही इज ऑब्जर्विंग एट 30 डिग्री.
यहां से फिर 30 डिग्री नीचे देख रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री हुआ ना। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप डेक एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द हाइट। हाइट क्या हो जाएगा बेटा, ये हाइट है आपका, दिस इज द हाइट, ये है एच। अगर आप एच को अच्छी तरह देखो तो एच इज नथिंग बट पी क्यू प्लस 10 मीटर है। द होल हाइट इज पी क्यू प्लस 10 मीटर, ये 10 मीटर तो पता ही है ना हमको। ये आपका नजरिया होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नॉट इंटरेस्टेड इन सर शिप कैसे जा रहा है, उधर आदमी सनग्लास पहना है कि नहीं, सामने आइलैंड में क्या दिख रहा है सर, हाथ में बियर का बोतल है कि क्या है, वो सबसे कोई मतलब नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम एंड देन ट्राई सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। नाउ यू थिंक व्हाट रेशियो, नाउ दिस इज सिंपल ट्रायंगल, व्हाट आर वी, सो नेहा बोलो, आवर मेन इंटेंशन शुड बी टू गेट द वैल्यू ऑफ पी क्यू। अगर पी क्यू मिल गया, हाइट मिल गया, और डी का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू तो आराम से आ जाएगा, ये दिया है ये दिया है, चलो निकालो। टैनवा 30, टैनवा, एंड यू शुड राइट लाइक दिस, हाँ, इन ट्राइंगल ए बी सी जो भी है, राइट डाउन प्रॉपरली, इन ट्राइंगल, ये इसका मेजरमेंट नहीं होता, ये 90 डिग्री है। You making that shows that your attention is not there in class. How can you write this 30 so big? कोई scaling नहीं है। Have you seen yourself in the mirror? How did God make you? Eyes of this size, face of this size. अब face इतना में इतना बड़ा आई थोड़ी, तो मिनियन है क्या? क्या वो डायग्राम बनाता है? So casual in approach. This boy makes a diagram like this. He does like this. इधर ऐसा लिखता है 30 डिग्री, ठीक है? हाँ? एक तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकला कि नहीं, कितना है, क्या निकालना है इसमें, 10 root 3, root 3 is 1.732, so the distance is 17.32 meters. What nonsense you all are doing. Take triangle, from triangle BAR क्या आ रहा है आपको, tan of 30 degree is equal to how much, 10 by D, क्या हो गया, उल्टा लिखे हो, so D should be equal to 10 by tan 30, this should be equal to 10 by root 3, so this should be equal to how much, rationalize कर लो, 10 root 3 by 3 which is equal to 17.32 divided by 3. So to find B, AR is also equal to BQ, right? हाँ, So then we can find B. और पी क्यू भी निकल जाएगा, बिल्कुल। एक बार डी निकालना है ना बेटा, डी का वैल्यू निकाल लो। सो आई वुड रादर से इनिशियली डोंट डू एनी डेसिमल, पहले ऐसे छोड़ के रखो। 60 में भी √3 आता है, याद रखिए। सो इसकी वैल्यू कितनी आई, 10 डिवाइडेड बाई √3। फाइनली विल डिक्लेयर आवर आंसर। नाउ वी टेक ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल PQB। PQB में क्या करेंगे बेटा, tan of 60, tan 60 will be equal to PQ divided by D. If this is D, this is also D. तो आ जाओ, tan 60 √3 होता है, so √3 into 10 by √3 is equal to PQ। तो PQ का वैल्यू आ गया, √3 कैंसिल, PQ की वैल्यू आई 10। तो हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया हमारा 20, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3 into sorry √3 into 10 divided by 3 which is 17.32 divided by 3, 3 5s are 15, 2 23, 3 7s are 21, 2 22, 3 6s are 18 and 4 40, then nahin, 3 7s are 21 and 1 10, 3.76 meters roughly, 5.76 is the distance. Have you done something wrong?
What is tan of 30? 1 by root. tan 30 is equal to, हाँ यहाँ पे गलती हुआ है ना, हाँ यहाँ पे गलती हुआ है. tan 30 is 1 upon root 3 is equal to 10 by d. So d का वैल्यू कितना हो गया? root 3 into 10 which is equal to 10 root 3 which is equal to 17.32 meters. Right? यहाँ पे गलती हो गया. This is 10 root 3. So do here. So tan 60 is root 3 is equal to PQ. PQ is PQ divided by D. Divided by D means divided by 10 root 3. So PQ should be equal to 10 into 3, 30. So this is 30, this becomes 40 meter. Okay. Clear? Have you understood? Shall we take one more? ये करो. This is somewhat similar to the first problem that we did. So either you copy the entire theory or you copy your keywords. So let me narrate the question. Okay, sorry, I got tired. Two pillars, equal height, either side of a road, which is 100 meter wide. So try to make it like the diagram of the first one. Yeah, the road is 100 meter wide. There are two pillars which are equal in height, and that means separated by 100 meters. Understood? Two pillars on either side of a road, 100 meter wide. Pillars are equal in length. Okay. Now next part. Angle of elevation of the top of the pillars are, सुन लो पहले, angle of elevation of the top of the pillars, angle of elevation of the top of the pillars are 60 and 30 at a point on the road between the pillars. It is somewhere between the pillars, I don't know. Two pillars and this is the road, this is the road. So the point need not be right on my throat. It can be on this side or it can be on this side, because if it was on my throat, the angle of elevation would have been equal. So point अगर ले लो, कोई भी arbitrary point ले लो अपना diagram में, लेकिन याद रहे जो पास वाला साइड होगा वहां बड़ा वाला एंगल बनेगा. हाँ, that is the catch. The more you try to draw it, you will get your feeling. Make a 100 meter wide road, two pillars standing. So you basically need to make what? One chai ka cup. Just open, top open rectangle, and take a point in between wherever you want, and make angle of elevation 60 and 30 degree. Mind you, 60 degree will be on the side which is near, 30 degree will be on the side which is far away. Got it, bacha? Is this question anyway different from that island, tree and river so far? No. That means one thing is understood, that they can just change the narration of the question. Problem is all same. आगे पढ़ते हैं. Find the position of the point between the pillars and the height of the pillar. Find the position of the point. So how is your point, Neha? Point is either A from one side and 100 minus A from the other side. So you have to give the position of the point. So basically you have to find out what is the value of A. Then you will say, suppose if A comes 40, you will say point A is 40 from this pillar and 60 from this pillar, and the height of the pillar. Both the pillars are of equal height, by the way. V1 drawing ready हुआ है, just like 3 idiot में. Is your project ready? Submit कर लो तो हम consider कर लेंगे. डायग्राम बना कि नहीं? वानिया, डायग्राम बना. हमारे पास ऐसा देखो, ऐसा एक रिवर है या रोड है, उस पे एक पिलर इस तरफ है, उस पे एक पिलर इस तरफ है, ऐसे दो पिलर है, दोनों की हाइट बराबर है, और पॉइंट कहीं भी बीच में ले लो. सपोज इधर ले लिया, अगर यहां लिया तो इसके पास है, तो इधर एंगल 60 बनेगा, इधर एंगल 30 बनेगा. आपको अभी निकालना है what is the position. Absolutely correct drawing. And slowly when you make those pillars also, don't try to make them in 2D, just make them one line. Or if you are making it like that, make a dotted line. That is actually the height. मतलब आपका pillar आप ऐसे दिखाओ, ऐसे pillar दिखाया ना, so make one dotted line. The angle is actually made till here.
instead of doing all this nonsense, just show the angle like this. ठीक, अभी निकालो तो. You need to get the value of A so that you can tell how is the pillar positioned, and you need to also get the value of. You're not putting the ideas. If this is A, that is 100. The road is 100-meter wide. So if that is A, this is 100 minus A. Then make 60 and 30. फिर उल्टा किया. As per your drawing, this is ulta. Which side is near to the pillar? So if you go near to the pillar, the angle reduces or increases? Why does it increase? So how does it increase? How do you say? Just because I said it increases, you erased it. Why does it increase? Amma, imagine this scale is your girlfriend. Agreed? If you see your girlfriend from far away, you can see with straight. एकदम पास आने से गर्लफ्रेंड का माथा देखना है तो कैसे देखोगे? तो एंगल बढ़ता है ना. हाँ बाबा, वही है. And if you think you're getting too much decimals also, you can leave your questions in roots. People don't kill you. But root 3 का value आपको आना चाहिए 1.732. There will be two equations here. Anyone who has done it? Neha, दोनों equation लिया, tan 60, tan 30. So you will see h is coming common in both. So you equate it in terms of h so that you can get a value of A. Once you get the value of A, you can find the value of h also. So one of the values will be tan 30 is equal to whatever it is, h by, in your question it may be A or 100 minus A, whatever, the way you have done it. Chalo, get the answer. You have to get the answer. CBSE will not excuse you. We'll have one more class on this. ये प्रैक्टिस के ऊपर है और कुछ नहीं कर सकते. इसमें सिखाने का क्या है? खाली डायग्राम्स बनाना आना चाहिए. After this, we will go into arithmetic progressions. That is something absolutely new that you'll learn. You have never learned it before. Very easy, very stylish. You only need to do plus minus correctly. Logic based question chapter. Probability जैसा है. Logical mathematics. अरे हुआ? क्या अर्जुन नहीं आया आंसर? No, should I use the diagram? Why you have not got the diagram? तब तो आप ये देखो, he said it very honestly. If you don't know the diagram, you cannot progress this problem. Simple. इसलिए आप लोग घर में आज अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, सबसे पहले you go through the video, what all diagrams I try to draw. आपका क्वेश्चन में क्या है? You try to see. I'll tell the question. Arjun, you see here. There is a 100-meter wide road. Agreed? 100 meter.
On both sides of the road you have got equal pillars, equal height pillars, and there is some point of observation. Let me take this as my point of observation. A, इसको ले लो PQ, है ना, और इसको क्या ले ले, इसको ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं C. Now tell me, I am observing it here, I am observing it here. If I take this as A, this will be 100 minus A. यही तो दिया है क्वेश्चन में. क्लियर? अब एक एंगल 60 है, एक एंगल 30 है. If I am more near, then my angle will be 60 here. Anyways, children, you could have been A on this side also. Don't worry, you'll get your answer correct. And this will be 30 degree. And this is the height of the pillar. I am asked to find out the location of this point A. Means I should be able to tell this is so much distance. अब लेना ही क्या है? Either tan लो. What is tan 60 equal to? Tan 60 is equal to h upon A. Tan 60 is root 3. So h is equal to root 3A. ये आपका एक इक्वेशन बन गया. इधर फिर से tan 30 लो. Tan 30 will be equal to h by 100 minus A. और h is equal to कितना आया बेटा? 1 by root 3 100 minus A. Am I correct? Both are values of h. So I can equate these two also. So let's equate these two. Root 3A is equal to 1 by root 3 100 minus A. ठीक है? रूट 3 ने रूट 3 को मल्टीप्लाई किया, 3A is equal to 100 minus A, और 2A is equal to 100. A is equal to 50. A is equal to 50. Or have I done anything wrong? This minus. Oh, 3A plus A, yes, sorry. 4A is equal to 100. A is equal to कितना? 25. This is 25 meters, so this will be 75. So I can say A is at a point 25 meters from this tower and 75 meters. Now I have to find out H. H को इससे equate कर दो. H is equal to root 3 into 25. So आप लिख दो 25 root 3, and if you have time you solve it. 1.732 into 25. आंसर आ गया आपका. Again, the same question. If I cannot interpret the question and draw the figure, I cannot solve the problem. Problem में कुछ नहीं रहता है इसमें. These are much better than trigonometric identities, according to me. Trigonometric identities will eat your head. This will not eat your head, unless and until you know how to picturize. This chapter, quadratic equation, word problem, linear equation, word problem, इसमें एक ही काम करना है. क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ो, अपने मदर टंग में ब्रेक करो, and then try to see the story behind the problem. Unless and until you see the story, and it is not with your problem. Any batch that I have taught at your generation, the only problem with you all is that drawing does not come natural to you all. Again, go back to the basics. During our time, if we were given study off early, means you have been relieved from your study early, drawing used to be one hobby of ours, irrespective of boy or girl. क्या कर रहे हो? मैं drawing कर रहा हूँ. We used to have a drawing copy and some colors, and we never got colors and all. They were very precious. Nowadays, if you raid anyone's house, every year he is getting one set of sketch pen and oil pastels and what not, and they go for. किसी को drawing का शौक नहीं है. इसको तो है ही नहीं. अगर ड्राइंग का शौक होता तो ऐसे कूद पटांग ड्राइंग नहीं बनाता. इन आवर डेज अ ग्रेड 1 चाइल्ड विल नॉट ड्रॉ लाइक दैट. और पेंसिल ही यहाँ पे पकड़ के लाइन ड्रॉ करता है. यहाँ पे तो कारपेंटर भी नहीं पकड़ता है पेंसिल. That means drawing is not natural to you. So that's a lacuna in this chapter. And second is story, reading something. Time नहीं है ना. Insta you all are in the world of shorts. वीडियो भी नहीं देखते, शॉर्ट्स में चाहिए सब. आपको यहाँ स्टोरी समझना है. देखो सब कुछ स्टोरी रहेगा. एक और क्वेश्चन ले लो. A person, this is an NCERT problem, standing on the bank of a river. मेरे लिए तो ये सब स्टोरी है. A person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank, तो आदमी रिवर के इस बैंक में बैठ के उस बैंक के ट्री के एलिवेशन को देख रहा है with 60 degree. Have you understood? विवान का आ गया है हाथ इस चैप्टर में. You have got it. He is observing at 60 degree.
Understood? Now what the man does, he moves 40 meter away from the bank. He moves 40 meter away from the bank. Should his angle of elevation increase or decrease? Decrease. Obviously, you're moving away. You're moving. थिएटर में आप और पीछे के सीट में जा रहे हो. So now his angle of elevation is found to be 30 degree. 30 degree when he is moving away. Now you will land up in problem in that diagram. You have to make it again. Did you understand what is the garbad you did in the diagram? So make the straight line again. Make the straight line again. And make your 60 degree somewhere from the mid of the page. Did you, Neha, समझ में आया? Yes, very good. Try to make it again. Try to make the diagram again. It's too small. But your diagram is correct. Try to make it again. You got it. You and Vivan समझ में आया आपको. सबसे पहले एक आदमी, look, this problem is somewhat like this. He observes, what was that? Hill or tree? What did I say? Hill. Hill. Okay, चलो. कुछ ऐसा है problem. So let's say this is a horizontal surface. Let's say the river is actually from here to here. A river is only from here to here. Try and understand. The tree is on the opposite bank. Here the tree is there. This is the tree. The man first observes the tree with an angle of 60 degree from the opposite bank. So अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसा है, देखो रिवर कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है. The river is flowing like this. And this is the bank. The man watches it with an angle of 60 degree. After that, the man walks 40 meter away. मतलब ये man अभी कुछ यहाँ पे आ गया होगा. And now he watches the same hill or tree with 30 degree. अब वो 30 degree से देख रहा है. And this distance is how much? 40 meter. इसको A ले लो, B ले लो, C ले लो, D ले लो. भाई साहब, आप 40 मीटर से देखो, 30 मीटर से देखो, जहां से भी देखो, will the height of the tree change? No. So the height of the tree continues to remain as h. And we have been asked to find out, okay, we have been, कहाँ गया, उलट गया पेज. Okay, find the height of the tree and the width of the river. Width of the river is also asked. So what is the width of the river? The width of the river is BD, which is equal to W. So we have been asked to find out it. See, once I draw this figure, job becomes very easy. अब तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री करना है. अब हमें रेशियो ही क्या लगाना है? एक रेशियो होगा tan 60. सर tan 60 होती है h अपॉन w और h इज इक्वल टू √3w. ये एक इक्वेशन आ गया हमारा tan 60 से. करेक्ट. एक और रिलेशन क्या होता है बच्चा? tan 30. tan 30 होता है h बाई w प्लस 40. यस और नो? tan 30 इज h बाई w. तो यहां से h की रिलेशन क्या आई बेटा? 1/√3 मल्टीप्लाइड बाई w प्लस 40. ठीक है बेटा. इसको हम क्या ले लेते हैं? नंबर 2. दोनों ही h है, सो दोनों शुड बी इक्वल. √3w शुड बी इक्वल टू 1/√3 w प्लस 40. √3 ने √3 को काटा, कितना कर गया? 3w. 3w और 1w इधर आएगा, माइनस w इज इक्वल टू 40. 2w इज इक्वल टू 40. W की वैल्यू आई 20. विड्थ ऑफ द रिवर इज 20. एक बार विड्थ ऑफ द रिवर आ गया तो बस हाइट भी आ गया. यहां से हाइट ऑफ द रिवर इज √3 इंटू 20, है ना. सो 1.732 इंटू 20 कर दो. 17 2 34 और 34 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा. Did you understand? कैम्ब्रिज में ये रहता है, they get a calculator, but they have one step more interesting. They have something called bearings also. Have you seen Ghazi movie? Have you seen? So उसमें do you see they use the set square and they drew, that is called bearing. How do you get to, when you are in the middle of the sea where you see nothing around you, then how do you know who is at what angle from you? So you have to make something called bearing drawings. Extensive use of scale and compass, but very interesting. You will be finding out answers exactly same. आपको कैसे पता पैसिफिक ओशन में कहीं खड़ा कर दूं ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर पे है आपको? हाउ डू यू नो विच डायरेक्शन टू सेल, हाउ मेनी डिग्रीज टू सेल? आर यू अंडरस्टैंडिंग?
बी एंड सी, सो दैट नथिंग इज इन एंड अराउंड यू, ओनली सी। अभी आपको क्या पता किस साइड जाना है? तो शिप सेल विद अ बेयरिंग, बेयरिंग विद ट्रिगोनोमेट्री आता है। अरे ये ड्राइंग, इसका खाली ड्राइंग ड्रॉ कर दो, देन आई एम लीविंग यू, खाली ड्राइंग। देयर इज एन एरोप्लेन एट ऑल्टीट्यूड, टेक द की पॉइंट्स। एरोप्लेन हाइट 1200 meters, aeroplane is at height 1200 meters, observes two ships. This is like Pearl Harbor movie, USS Lincoln and USS Roosevelt, दोनों को क्या करना है? बॉम्ब करना है अभी आपको। Aeroplane is at 1200 meter. What about that page? That page? What? You will complete. Previous so many problems you never completed and you think you will complete. Previous all last year polynomial problems. These gaps are always there, my dear. He is leaving gap. I asked him, what about the gap? I'll complete it at home. So the problem the board of copy. Okay, aeroplane is at 1200 meters, observes two ships. Okay, so it will observe with what angle? Elevation or depression? Depression. पहला शिप को देखता है and the depressions are 60 and 30 degree. Just इसका उल्टा ड्राइंग हो जाएगा। It is like this. See, aeroplane is at this height. Look at me. Aeroplane is at this height. One ship like this, one ship like this. Same drawing ही आएगा। Aeroplane is at this height. नहीं, उल्टा भी नहीं, यही ड्राइंग होगा। Observe ship 1 and ship 2. Look at the beauty of the drawings. Look. This is your aeroplane. ये आपका एरोप्लेन है ना। It observes with depression. Depression कैसे मेजर करते हैं बेटा? ये एंगल होता है डिप्रेशन का। So दूर वाला शिप को 30 से मेजर करेगा तो ये 30 डिग्री होएगा, और पास वाला शिप को 60 से मेजर करेगा तो ये 60 डिग्री होगा। ड्राइंग तो सेम है। That's why, see, why did I tell you that I know time is up. I said that just do the drawing और छुट्टी। ड्राइंग में कोई चेंज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में चेंज है। 30 and 60, you just need to find out the distance between the two ships. Look, they've asked you to find out this 40 for you. In this problem, they've asked you to find out this 40 for you, distance between the two ships, where the height is given to you. So you can try this at home. Height is 1200. Why are these things given to us? Look, now try to understand. इसको पढ़ के, nowadays your generation has this habit, ये पढ़ के मेरा फायदा क्या है? Tomorrow, if you become good avionics engineers, a fighter aircraft is as good as its avionics are. Why is a MiG-29, हमारा जो MiG है ना, MiG-21s and MiG-29 इतना पुराना है, आज भी क्यों? They are able to give very good fight to the F-16s. ये अभिनंदन वाला केस में Pakistan doesn't document that they lost that F-16, otherwise, and Russia cannot award, otherwise Russia would have awarded. इतना पुराना aircraft को, it is as good as your avionics. This aircraft spots two ships, enemy ships out here. Immediately it can calculate the angle. The computer should be immediately able to give it what is its altitude, what is the distance between. But mind you, he will also move, these two will also move. That is where your challenge comes in the next stage. जब आप बड़े होते हो, ये भी move करेगा. And this one will also move. But that was faster. Whatever it is, it cannot wait that much. ये भी वहां से एंटी एयरक्राफ्ट फायर कर देगा सबको. Fighting is all between who does it first. ये मूव करेगा, ये भी मूव करेगा. By that time, the simulation software has to work and he has to find a lock on. ये जो Maverick, I got a lock on. इसको lock on करना है. Within that amount of time. And the missile that he will launch will have a CP, circular error probability, say 0.1%. इतना error में वो missile गिर सकता है. The lock on has to be on that. And then you have to release. And by the time you release, you should be out of the radar of this one also. That is all warfare all about. So if you think that people only go to army and save, no, you can work on these also. ये सब कितना इंटरेस्टिंग है. इसको समझने के लिए पहले बेसिक्स तो समझो. और ये वर्ल्ड इतना आसान नहीं होगा. ये सब मूव करेगा, ये डॉज करेगा, है ना? And it has to go out. So all this calculations comes. So when you think that IT करना है तो ये सब IT में काम करो. Avionics देखो कितना सुंदर चीज है. These are called electronic war management system. Nowadays nobody goes into the battle and takes out his तलवार like महाराणा प्रताप. ऐसी लड़ाई जीती जाती है. And Israel is the king of all these things.
उनके जैसा एवियोनिक्स किसी के पास नहीं है. We are struggling with the fighter aircraft. Their enablement of the aircraft is so strong. Got it? चलें तो अगला एक और क्लास करेंगे इसके ऊपर. At that time we will do some more problems. But if you don't practice anything between these 7 days, आप रुक जाओगे. Lot of notes have been given to you. Yeah. You sir, you sent so many love letters. Yeah, a lot of notes, question papers. How many of you did refraction questions? Reflections पहले दिया था. Oh, very good, sir. Frame it.